telling your followers. Yes, hi guys, I'm Dr. Sabiha और आज लाइव जाने का मकसद कोई सवाल जवाब या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई डिस्कशन या इट्स एनीथिंग रिलेटेड टू माय टॉपिक, ऐसा कुछ नहीं है. बेसिकली in today's Times of India, early morning जब पेपर आया तो there was a beautifully expressed on such a sensitive topic. आज के टाइम्स ऑफ इंडिया सबके पास आई होप होगा, तो प्लीज़ संडे स्पेशल पेज नंबर 7 पे का आर्टिकल है जो मुझे लगा कि मैं मेरे लाइव पे आऊँ और पढूं, ताकि जिस शख्स ने वो आर्टिकल लिखा है somehow उनका मैसेज बहुतों तक पहुंचे. That is my pure intention. So I'll be live for maybe 15-20 minutes. I'll read out that article. Thanks Ashish for joining. So maybe I may not respond to the comments or to people who are joining here, but yes, I want to read out that article. और आर्टिकल है अबाउट ग्रीफ, क्योंकि कोविड चल रहा है एंड एवरीवेयर हम देख रहे हैं कि लोग वी आर जस्ट लूजिंग ऑन पीपल. कोई भी कभी भी हमें छोड़ के जा रहा है एंड बिलीव मी, वो वाला दर्द, वो वाला एम्प्टीनेस, वो वाला ग्रीफ फेस करना अपने आप में एक टोटली अलग एक्सपीरियंस होता है. एंड इट्स टोटली वेरी सेंसिटिव टॉपिक जिसकी एक्सपर्टी मेरे पास 100% नहीं है. बट येस, आई विल जस्ट गो आउट एंड रीड दिस आर्टिकल लाउड सो दैट मेरा इंस्टाग्राम लाइव उस शख्स तक पहुंचे जिनका नाम है अमित फंसालकर. एज 45, इज फ्रॉम पूना, इज एन इंजीनियरिंग मैनेजर, IT सेक्शन लिखा है एंड ही हैज़ रिटन दिस आर्टिकल इन टूडेज टाइम्स ऑफ इंडिया. और इन्होंने इतना अच्छे से ये आर्टिकल लिखा है तो मुझे लगा कि आई शुड यूज माई प्लेटफॉर्म टू रीड आउट दिस एंटायर आर्टिकल. ऑल दोज हु आर डीलिंग विद ग्रीफ, अगर किसी का बहुत दिल के करीब शख्स इस कोविड में गुजर चुका है, किसी की अचानक डेथ हुई है, समवन मस्ट हैव लॉस्ट हिज फादर, मदर, वाइफ, सिस्टर, फ्रेंड, या सिर्फ मेरी बिल्डिंग में भी किसी पड़ोसी का बेस्ट फ्रेंड चल बसा है, ही इज नो मोर, इट्स नॉट ईजी. एंड जिस ढंग से उन्होंने ये मेंशन किया, अगेन आई गिव अ लाउड शाउट आउट ऑल दोज फॉलोअर्स. अगर इंस्टाग्राम पे अगर ये नाम किसी को मिलता है, द नेम इज अमित फंसालकर, हिज एज इज 45, he's from Pune. I just want to give a big thanks through my Instagram live कि इतना अच्छा आर्टिकल किसी ने लिखा है. So here I read it. Earlier this month, I faced grief for the first time in a very personal sense when I lost my father to COVID-19. I had read some of the sorry for my pronunciation, some of the Chimamanda, Ngozi, Adichie's notes on grief last year in the New Yorker. Highly recommended reading it, although I have not finished it but plan to. I thought that grief would be an overbearing, all-encompassing emotion, clouding everything I did. It's anything but. It comes and goes with no apparent rhythm or rhyme. Its periodic absence even makes you nervous because you know it will come back unannounced. In this time when most of us are affected by death, either directly in the family or in friends' families or neighbors, we should talk about grieving. We are normalized that privatisation of grief. We have normalized the privatisation of grief. But when tragedy is public, I think it's okay to talk about your grief. I really feel कि बहुत सही लिखा है. I'll read ahead. Of course, it's not mandatory, but just remember that it's not mandatory to grieve in a corner. Not anymore. And yes, there's no timeline for grief. It's never too long to grieve or too short. It's your grief. You decide when it's finally over, not others. Not even your near and dear ones. Be sensitive to their calendars of grief, but it's okay to have your own too. There's no right way to grieve. Everyone will have an opinion. Someone will tell you to take time off. Someone will tell you to go back to work. Someone will tell you to be with people. Someone will tell you to find solitude. Try the conflicting opinions in small doses. See what works for you. Keep doing more of it till it doesn't. It's okay to feel irritated. The hardest part of grieving could be reliving the painful memories for the benefits of others. But remember, they have cared to reach out. It's not easy for them, either, since most of us have not been taught to have those conversations.
Sometimes you will find that talking about things with people who are not directly affected helps, because you can indeed burden them the way you can't burden someone who is directly affected. Find that someone. Let's also destigmatize the coexistence of joy and grief. Yes, they don't have to be exclusive. To survive grief, you need bouts of joy. Like you come up for oxygen while swimming. It's okay to smile, to reread your favorite book, to cook your favorite soul food, to watch a rom-com, to play a peppy song. Don't let society decide what you can't do. You have to live with it. You get to decide how you fight it. You are the boss. He has put a disclaimer at the end. I have no formal training in psychology or psychiatry. This is my very personal take. So that was my intention to read out this article loud. It is written by Amit Phansalkar. Amit sir, आपने इतना खूबसूरती से इतने सेंसिटिव टॉपिक पे लिखा है, तो मुझे लगा कि मैं अपने लाइफ पे जाऊं और इस ग्रीफ पे ये पूरा आर्टिकल पढ़ के सुनाऊं, ताकि ये मेरे इंस्टाग्राम पेज पे परमानेंटली रहे, हमेशा के लिए रहे, कि जब भी मुझे लगे कि ग्रीफ पे मैं क्या बात करूं, क्या सोचूं, सो दिस विल बी द आर्टिकल आई विल बी रेफरिंग टू. So that's all guys. Thanks for all those who could join. Please, अगर आप में से कोई भी किसी को भी ऐसा लगता है कि there's a lot of grief in your life, then you don't need to have a timeline. Take your own time. किसी के खो जाने के बाद उसको इतना जल्दी भूल जाके आगे बढ़ जाना, किसी के लिए ऐसे होगा, किसी के लिए टाइम लग सकता है. That was the basic meaning of the article. There's a lot in the article, so please rewind the video and see it. So on that note, signing off guys. Bye bye.